हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अजहर लाइव। आज हम लोग आरआरबी, एम्स, पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आती है उसके लिए टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हुज डिस्कवर्ड द स्करे? ए मैरी क्यूरी, बी विलियम कॉन्रड रॉन्टिजन, सी थॉमस एडिशन, डी हेनरी बेकुरल। जल्दी से आंसर करिए। द आंसर इज बी, विलियम कॉन्रड रॉन्टिजन discovered 1895. Second question, what is the wavelength range of diagnostic X-ray? A 10 to 100 meter, B 10 to की power 10.10 power minus 12 meter. The answer is B, वेवलेंथ इसकी 0.1 से 0.001 नैनोमीटर तक होती है. The X-ray as form: sound, A sound energy, B mechanical energy, C electromagnetic radiation, D nuclear energy. The answer is C इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि सिमिलर होती है किसके? लाइट के. इसकी वेव किसकी सिमिलर होती है? लाइट के. क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ एक्सरे वेवलेंथ इज ए एमेस्ट्रॉन, बी कैंडेला, डी सी जूल, डी ग्रे. द आंसर इज ए एमेस्ट्रॉन. 1 एमेस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. commonly used to express the X-ray wavelength. Which is the question number 5? Which is the part of the X-ray tube emit the electron? A anode, B cathode, C target, D focal spot. The answer is B cathode. The cathode contain a filament that emit the electron when heated. Question number 6. The anode is an X-ray tube is made of copper, B tungsten, C aluminum, D iron. The answer is B tungsten. Tungsten is used due to his high melting point and high atomic number. The atomic number of tungsten is 74. Next question. What's control the quantity of X-ray produced? KVP, MAS, C exposure time, and B and C. द आंसर इज डी, बी एन सी. एम ए एस और एक्सपोजर जो टाइम जो होता है एम ए प्लस एम ए एस, ये दोनों करता है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट्स कंट्रोल द क्वालिटी पेंटेटिव पावर एक्सरे? पेंटेटिव पावर कैसे होती है? जिसको बढ़ाने से पेंटेटिव पावर इंक्रीज होती है. द आंसर इज बी, केवीपी के बढ़ाने से पेंटेटिव पावर इंक्रीज होती है, जिससे हम काफ़ी कम एक्सपोजर में अच्छी इमेज प्राप्त कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, फोकल स्पॉट साइज इफेक्ट? ए कंट्रास्ट, बी रेजुलेशन, डी सी डेंसिटी, बी पेंट्रेशन. द आंसर इज बी रेजुलेशन. कॉलीमीटर restricted X-ray beam area for interested. Question number 10, the line focus principle is used to increase contrast, improve resolution, reduce heat loading, and D, B and C. The answer is B and C, improve resolution and reduce heat loading. Question number 11, what is the function of collimator? Increase intensity, reduce scattered radiation, C produce electron, D convert X-ray to light. The answer is B, collimator restricted the X-ray beam to the area of interest. Question number 12, the filter used in X-ray tube is made of A lead, B aluminium, C copper, D silver. The answer is B, aluminium filter remove the low energy X-ray tube, reduce the patient dose. Question number 13, the Heal effect is due to A anode angle, B tube current, C filtration, D scattered radiation. The answer is A anode angle. X-ray intensity is greater on the cathode side due to the angled anode target. 14. Question number 14. The SI unit of radiation exposure is A Roentgen, B Gray, C Sievert, D Coulomb upon kg. The answer is D Coulomb plus kg. 1 Roentgen equal to 12.58. ठीक है. The question number 58. The photoelectric effect occurs low KVP, high KVP, high atomic number tissue, and D, A and C. The answer is D, A and C, low KVP में और high atomic number tissue. The photoelectric effect occur
when the interaction cause the image of contrast X-ray, quantum scattering, photoelectric effect, pair production and coherent scattering. The answer is B. The photoelectric effect is responsible for subject contrast diagnosis radiology. Question number 17. Compton effect occurs in complete absorption. B. Scatter radiation. C. Pair formation. D. No interaction. The answer is B. The Compton effect, the X-ray photon is created of an outer electron. Question number 18. Grid is used to increase exposure, reduce scattered radiation. C. Protect patient. D. Enhance contrast. The answer is D. Grid improves the image contrast and absorbing scattered radiation. Question number 19. Common grid use ratio: A. 3.1, B. 5.1, C. 8.1, D. 16.1. The answer is C. 8.1. Grid offer a balance between the contrast, improvement and exposure. Question number 20. Interference screen convert A. Light to X-ray, X-ray to light, electron to heat, photon to electron. B. X-ray, X-ray to light. A screen contain phosphor emit to contain the X-ray to light. Thanks for watching my videos.